Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Mehboob Ali Khan, lecturer in mathematics from Shah Abdul Latif Government Science Degree College, Mir Prakash. I will teach you in these video lectures conic section, chapter number 7-8 from intermediate mathematics. So lecture number 1 is introduction of conic section. Learning objectives, introduction, conic, geometrical representation of cone, conic section, geometrical representation of conic section, elements of conic section, non-degenerate conic sections, degenerate conic sections, eccentricity of the elements of conic section, some basic definition of conic section. जो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन, उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है इंट्रोडक्शन, कॉनिक सेक्शन, geometrical representation of conic section, elements of conic section, non-degenerate conic section, degenerate conic section, eccentricity of the elements of conic section, some basic definition of conic section. Introduction. Apollonius, born in Perga, Turkey and died in Egypt. He was a Greek geometer and astronomer known for his theories on the topics of conic section. He was also one who gave the name parabola, ellipse and hyperbola. तारीखी लिहाज से जो एपोलेंस मैथमेटिशियन थे उन्होंने जो है कि कॉनिक सेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कॉनिक सेक्शन पे बुक्स लिखी और उन्होंने ही पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के नाम दिए कॉनिक सेक्शन में, जो तुर्की में पैदा हुए थे और इजिप्ट में वफात पा गए। इनका टाइम ड्यूरेशन 262 BC से 190 BC तक था। In this section we will discuss some of the basic geometric properties of circle, parabolas, ellipses and hyperbolas. इस सेक्शन में जो है कि हम डिस्कस करेंगे सर्किल की geometrical properties as well as parabola, ellipse and hyperbolas. These curves play an important role in calculus and also having broad range of application in such field as design of telescopes and antennas, planetary motions. These इन कर्व की जो है कि बहुत ही अहमियत है कैलकुलस में और एक वसी तर फील्ड एप्लीकेशन फील्ड यूजेस ऑफ एप्लीकेशंस हैं इन टेलीस्कोप डिज़ाइनिंग में, एंटीनास में, प्लैनेटरी मोशंस में वगैरह वगैरह। Conic. The term conic is derived from the word cone. So conic क्या है? Conic लफ्ज़ ड्राइव किया गया है, यहाँ कौन से लिया गया है, लफ्ज़ कौन से लिया गया है। तो what is conic? A cone is generated by all lines through a fixed point and the circumference of a circle. तो ये डेफिनेशन ऑफ कौन है, कौन इज जनरेटेड बाय ऑल लाइंस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कौन। अब इस कौन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो वी हैव टू डिस्कस इन सेक्शन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कौन, हाउ वी कैन डिज़ाइन और हाउ वी कैन इलस्ट्रेट दिस डेफिनेशन ऑफ कौन। So let L be a fixed vertical line. L हमारे पास एक fixed vertical line है like this. This is L line, white line. And M be another line. M एक orange line है और ये एक other line जिसका हमने नाम दिया है M. Intersecting L at a fixed point V, जो L line को intersect कर रही है एक fixed point V पे, this point is called V, is pictured geometrically in figure 1, जैसा कि ये आपको figure 1 में दिखाई गई है। Now we rotate line M around line L in such a way that the angle alpha remains constant. अब हम line M को
रोटेट करेंगे सराउंड द लाइन एल, इस तरह कि ये जो हमारी एंगल है अल्फ़ा वो कांस्टेंट रहे, वो फिक्स रहे, उसमें कोई चेंजिंग ना आए। देन द सरफेस जनरेटेड इज डबल नेप राइट सर्कुलर कोन इज पिक्चर्ड ज्योमेट्रिकल इन फिगर 2, जैसा कि आपको फिगर 2 में दिखाया गया। तो ये फिर जैसे हम लाइन एम को रोटेट करेंगे सराउंड दिस लाइन एल, तो हमारे पास ये डबल नेप सर्कुलर कोन बनेगा। एक इस हाफ से यहाँ से लेके ये जो लाइन का पीस है ये अपर नेप को जनरेट करेगा। सिमिलरली ये लोअर पीस ऑफ लाइन, सेगमेंट ऑफ लाइन, ये लोअर नेप को जनरेट करेगा। The point V is called the vertex of the cone. This point V is called vertex of the cone. The line L is called axis of the cone, and line L is called axis of the cone. The rotating line M is called the generator of the cone. This M rotating line is called generator of the cone, जो इस कोन को जनरेट कर रही है। The vertex separate the cone in two parts called upper and lower nape. ये वर्टेक्स जो है कि इस फिगर को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, एक अपर वाला हाफ, सेकंड लोअर हाफ. So this upper half is called upper nape and lower half is called lower nape. Now if we intersect a cone with a plane, the section so often is called conic section. अब इस कोन को हम प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे. प्लेन इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर, टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर. अगर उसको हम इस कोन के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे तो जो क्रॉस सेक्शन या जो एरिया हमें मिलेंगे उनको कहते हैं कोनिक सेक्शन. So what is conic section? So here we to see the definition of conic section. The locus means the set of all points or lines. The locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to the perpendicular distance from a fixed straight line bears a constant ratio is known as conic or conic section. तो ज्योमेट्रिकली अब इस डेफिनेशन को हम एक्सप्रेस इस तरह करेंगे. तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेफिनेशन वी कैन एक्सप्लेन एज लेट P इज द वेरिएबल पॉइंट. P हमारे पास कोई भी वेरिएबल पॉइंट है. F be a fixed point and L be a straight line in XY plane is pictured geometrically in figure number 3. जैसा कि फिगर नंबर 3 हम कंसीडर करते हैं जिसमें XY प्लेन है. ये हमारा XY प्लेन है जिसमें हमने एक फिक्स पॉइंट की है. ये पॉइंट है फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड F और एक हमने वेरिएबल पॉइंट ली है जिसको हमने नाम दिया है P. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन this variable point to fixed point and this variable point to this straight lines bears a constant. This is called conic section. Now according to definition of conic section, we mathematically write as or express as the distance from variable point to PF is PF and variable point to this vertical line is PM. So according to the definition, the distance of PS ratio with PM equal to constant. So if we say that this constant is equal to E, then this equation becomes PF upon PM is equal to E. We have named that equation number 1, where E is called eccentricity. Now elements of conic section. There are two types of elements of conic section. Number 1, non-degenerate conic sections. Number 2, degenerate conic sections. So what are the non-degenerate conic sections? The most familiar planes curves, namely circle, parabola, ellipse and hyperbola, are called non-degenerate conic section. Circle, parabola, ellipse and hyperbola
are the figures which we have called non-degenerate conic sections. These curves called conic section are conic because these curves are obtained by intersection of cone and plane. ये जो कर्व हैं इन्हें कहते हैं conic section because ये हमें intersection of plane and cone के वजह से मिलते हैं. If we intersect a cone with a plane that is perpendicular to the axis of the cone and does not contain the vertex and cut only one nape of the cone, then this is called circle. As shown in figure 4, this plane is cutting this double circular nape in the one nape, and this plane is perpendicular with the axis of this cone. So this cross section area obtained if this plane intersect this cone and is perpendicular to the axis of the cone. So this cross section area is called circle. Similarly, if the cutting plane is slightly tilted and cuts only one nape of the cone, then it is called ellipse. अगर यही हमारा प्लेन थोड़ा सा या हल्का टेढ़ा हो और कट करे प्लेन कोन को और कोन के एक नेप को, तो जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑब्टेन होगा या जो ये फिगर बनेगी, दिस इज कॉल्ड ellipse. If the cutting plane is parallel to the generator of the cone and cuts only one nape of the cone, but then it is called parabola. अगर यही कोन इस प्लेन इस कोन को कट करे एक नेप को और ये कोन जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो इस जनरेटर के, then this cross section area is obtained is called parabola. If the plane intersects both hall of the cone or both nape of the cone but does not pass through the vertex, then it is called hyperbola. अगर ये प्लेन दोनों नेप ऑफ द कोन को कट करे और ये वर्टेक्स से पास ना हो, देन जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ऑप्टेन होंगे, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, सिमिलरली ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया. So this figure is called hyperbola as shows in figure number 4. Geometrically, if the plane passes through the cone nape, तो दी वन नेप, अगर ये प्लेन कोन के एक नेप से पास हो रहा हो, जैसा कि आपको फिगर नंबर 5 में दिखाया गया है, then we have the following cases. फिर हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. कौन सी? केस नंबर 1, इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये बीटा की जो एंगल है, ये बीटा एंगल 90 डिग्री की मिले, मीन्स ये कोन प्लेन इस कोन को इस तरह कट करे कि ये जो इस वर्टेक्स एक्सिस और इस प्लेन के दरमियान जो ये एंगल है वो 90 डिग्री की बने, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑब्टेन होगा उसे कहेंगे सर्किल. केस नंबर 2, इफ अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा लेस देन 90 डिग्री, देन प्लेन कट्स वन नेप. अगर ये अल्फा एंगल बीटा से छोटी है और बीटा लेस देन होगा 90 डिग्री, तो ये प्लेन कट करे एक नेप ऑफ कोन को, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ऑब्टेन होगा, जो ये फिगर बनेगी, इट इज कॉल्ड पैराबोला और इलिप्स. इट इज कॉल्ड इलिप्स. केस नंबर 3, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर ये दोनों एंगल्स अल्फा और बीटा इक्वल हों और ये प्लेन एक नेप ऑफ द कोन को कट करे, तो दिस
figure is obtained or this cross section area is obtained is called parabola. Case number 4, if 0 less than beta or equal to beta means beta greater than 0 हो या equal to 0 हो and beta less than 0, then plane cuts through both the nape of the cone. अगर बीटा की जो एंगल है वो लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, लेकिन अल्फा से छोटी हो, तो ये जो प्लेन है वो इस कोन के दोनों नेप को कट करेगा और इस वर्टेक्स से पास नहीं होगा. सो दिस क्रॉस सेक्शन एरियाज आर कॉल्ड hyperbola. Now number 2, degenerate conic section. If the plane pass through the vertex of the cone, double nape cone, then the intersection is point. अगर ये प्लेन हमारा इस वर्टेक्स से पास हो तो जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, जो मिलेगी हमें, वो पॉइंट कहलाएगी. देन दिस इज कॉल्ड पॉइंट. ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो वो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और ए स्ट्रेट लाइन, या वो किसी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. मीन्स अगर ये प्लेन इस कोन के वर्टेक्स से पास हो तो ये या तो किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, या स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. एंड दीज आर कॉल्ड degenerate conic sections. Geometrically, when this plane cut pass through vertex, then we have the following cases. Case number 1, if alpha less than beta, beta less than or equal to 90 degree. अल्फ़ा, ये जो एंगल है अल्फ़ा, वो इस बीटा से छोटी हो और बीटा 90 डिग्री से छोटा हो, then this plane pass through this vertex and this cross section area is called point, as shown figure number 10. केस नंबर 2, if बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, अगर बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है means these both angles are equal, then section is straight line, then means this plane pass through the generator or contain this generator, then this section is called the pair of straight lines. means alpha is equal to beta, ये दोनों angles are equal होंगी, opposite angles, then this plane contains the generator of the cone and this represent pair of this cone represent state of line. Case number 3, if alpha beta greater than or equal to 0 and less than alpha, then the section is pair of intersecting straight lines. मीन्स बीटा जो है कि वो 0 से बड़ी हो या इक्वल हो और इस अल्फ़ा से छोटी हो एंगल, देन दिस प्लेन intersect and passing through the vertex of the cone represent pair of straight lines like this line, this line, as shown in figure 12. Now we have to find the eccentricity of the elements of conic section. So we have to know that the elements of conic sections are circle, parabola, hyperbola, ellipse, and straight lines. So according to the definition of conic section, PF upon PM is equal to E, means the distance between variable point to fixed point divided by the distance variable point to perpendicular line equal to a constant E. This is the definition of conic section. Now we have the following cases. Case number 1, if this PF distance equal to PM, मतलब कि अगर ये दोनों डिस्टेंस हमें इक्वल मिल जाएं तो क्या होगा कि PF इक्वल टू PM, तो आइदर यू हैव टू PF
put PM or PM put PF. So here we have to consider PM is equal to PF. So this will be PF and this will be PF. So PF cancel, which implies that E is equal to 1. So if E is equal to 1 means these both distances are equal, then in this case the equation number 1, like this equation, represent parabola. It means this locus of points represent a parabola. Case number 2, if PF less than PM means this distance is less than PM. For example, this will be 1, this will be 2. Then division of this PF divided by PM. This will be 1, this will be P. So means 1 upon 2, this will be less than 1 because this is less than this. So denominator is greater and numerator is less than denominator. Then always fraction represent will be less than 1. So which shows that this E less than equal to less than 1. So in this section, this locus of points represent an ellipse if E is equal to less than 1. Case number 3, if PF greater than PM, if this distance is greater than this, for example, if this is 3 and this is 2, then 2 divided by 3 or 3 divided by 2, so it is will be greater than 1. So if PF is greater than PM, then this fraction will be greater than 1, which show that E is greater than 1. In this section, equation number 1 or this locus of point P represent a hyperbola. Case number 4, if PF is equal to 0, if this distance becomes 0, then what will be happen? So putting PF is equal to 0, 0 upon PM equal to E will show that E is equal to 0. In this case, equation number 1 matlab PF upon PM equal to 0. So this equation represent a circle. It means the locus set of all points or lines P is called circle. मतलब कि eccentricity of P equal to 0 है. Eccentricity of the remote point. Case number 5, if PM is equal to 0, अगर ये PM equal to 0 हो जाए, then we have to put PM is equal to equation number 1. So PF upon 0 equal to E. So PF upon 0 equal to infinity, which shows that infinity is equal to E is equal to infinity. In this case, equation number 1 represent pair of straight lines. It means this locus of points represent a straight line. So we have to learn that the eccentricity of parabola is greater than 1 and eccentricity of ellipse is less than 1, or parabola is 1, eccentricity of ellipse is equal to 1, less than 1, and eccentricity of hyperbola is equal to greater than 1, and eccentricity of circle is 0, and eccentricity of the pair of straight line is infinity. Some basic definition of conic section. So in this section we have to consider some basic definition that will be useful in coming next lectures. So you must be remember this definition. Number 1, generator. What is a generator? It is a straight line running from a vertex to the base of the cone. It's called generator. Focus, the fixed point is called the focus of the conic. Directrix, the fixed straight line is called the directrix of the conics. Axis, the intersection of point of conic and the axis are called vertex, or a straight line passing through the focus and perpendicular to the directrix is called axis. Chord, a line segment joining any 2 points of the conic is called chord of the conic. Focal chord, a chord of conic passing through its focus is called focal chord.
Center, the point which bisects every chord of the conic passing through it is called the center. Double ordinate, it is a straight line which is perpendicular to the axis and terminate at both ends of the curve. Latus rectum, the line passing through the focus and parallel to the directrix is called latus rectum, or it is double ordinate which pass through the focus. Vertex, the intersection of point conic and its axis are called vertices of conic. Eccentricity, the constant ratio is called the eccentricity of the conic. So E will be defined as the distance of all points of conic from a fixed point and divided by the distance of all points of conic from a fixed straight line is called eccentricity. Best of luck. Thank you.